हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक काफ़ी मस्त प्रोडक्ट लाया हूँ जो कि भी रिसेंटली लॉन्च किया है गूगल ने। दैट इज़ कॉल्ड स्टिच। स्टिच जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो, कुछ बुनना या फिर सिलना, लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू टेक इट एज इन योर लैंग्वेज। और या सो स्टिच एक प्रोडक्ट है जो कि भी रिसेंटली लॉन्च किया है गूगल ने, एंड दैट इज़ एन काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर ऑफ फिग्मा। तो इन लोगों ने लाइक फिग्मा को कॉम्पीट करने के लिए बेसिकली लॉन्च किया है, एंड इट बेसिकली डिज़ाइंस योर यू आई यू एक्स रियली वेल. I have tried it a lot in last few 2 days, and I really loved it. Earlier there was a platform called I'm forgetting the name, but I will going to add it in my description so that you all can check that for sure. लेकिन वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया था in terms of designing, and it used to give you the actual HTML and CSS also along with the design. So it was kind of an amazing tool that I found out earlier. और उसके बाद मुझे ये अभी पसंद आया है, स्टिच। तो अभी इसमें क्या है कि इन लोगों ने अपने काफ़ी प्रीमियम मॉडल्स दे रखे हैं, जैसा कि यू कैन सी हेयर 3 फ्लैश, 3.1 एंड सो ऑन। यहाँ पे रीडिज़ाइन है, थिंकिंग विथ 3.1 प्रो है, and you can also like ideate with this. So for example, if you want to bring a problem to solve and see solutions of something, so you want to have some kind of enhancement in your existing UIs, that you all can do in this. And it has a specific option for you to start design with mobile app or web app. So you can simply choose between like what you are targeting for, majorly or originally you are targeting for. So you can have those options from here, and they have also provided some default templates that you can see from here. So let's see this maybe, or also open some other. And meanwhile, let's also like check out the other features that it is providing. One is easy edits. It provides you like all kind of edits with just asking in the prompt section. So you can ask it to change the color scheme completely. It will change the color scheme completely, like throughout the layouts. You can export the code from it simply, and you have all the other options. Like if you want to design it your own, you can design it. I have tested all these features that's why I'm telling, and it's quite good. I really like this product, but I don't know like whether how successful it will be, because it is currently under Google Labs. So let's see. Yeah, as you can see, it is designed by this Stitch platform. It is a kind of example themes from them. But I have also tried designing few layouts. I can show maybe just 1 second. Yeah, here you can see. मैंने कल इससे अपना पोर्टफोलियो बोला था कि रीडिज़ाइन करो, और इसकी एक ख़ास बात है कि ये like you can provide it the link. For example, I provided my portfolio link orendra.com, एंड ये वहाँ पे गया, वहाँ से स्नैपशॉट्स लिए, वहाँ से देखा कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या है, एंड अकॉर्डिंगली डिज़ाइन सम स्क्रीन्स pretty well, but few like with few screens it lacks the creativity, but that we can improve upon asking prompt like the follow-up questions from it. So यहाँ पे आप लोगों को मतलब आप लोग देख सकते हो काफ़ी इजीली कि इसने थोड़ा सही काम करने की कोशिश करी है। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ तो। और जैसा कि आप देख सकते हो, इसने डिटेलिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है। और यहाँ पे देखोगे तो लाइक ऑल द स्टैक इट हैज़ एडेड प्रीटी वेल, एंड द कलर स्कीम इट हैज़ सेलेक्टेड इज़ ऑल्सो क्वाइट अमेजिंग. लाइक फॉर दिस स्क्रीन इट इज़ क्वाइट वेल, बट हेयर मुझे नहीं पता इसने क्या सोचा और क्यों लगा दिया ऐसा. तो वी कैन आस्क इट टू लाइक री design this section or maybe reconstruct so that it can look better. Ultimately, it is an AI product, and what you can expect more than this from AI in this like developing era. Currently, AI is in development, I would say.
not completely in production. So yeah, but according to the AI, it's quite well, I would say. Yeah, quite nice. So they are like maybe trying to build more and more upon this, and might be able to achieve the designer like efficiency and quality in future. So I hope you like this video. If you like this video, please do like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.